Hello students and welcome to your English language class. I hope all of you are doing great. In today's class we'll be reading chapter 7 of your literature book, and the title of this chapter is The Terrific Saurian Combat, and it has been written by Jules Gabriel Verne. Now, talking about the author, Jules Gabriel Verne was a French novelist, poet, and playwright, best known for his adventure novels and his profound influence on science fiction. His thoroughly researched novels include Journey to the Center of the Earth, which was published in 1864, 20,000 Leagues Under the Sea, published in 1870, and Around the World in 80 Days, published in the year 1873. And this chapter, The Terrific Saurian Combat, has been adapted from his famous novel Journey to the Center of the Earth. Okay. Now let us read from the text. First is warm up. Now look at these prehistoric animals that actually lived millions of years ago. Now what do you mean by prehistoric? Means ancient or very old animals. You must have heard about them, or maybe you have read about them in some books. So these are the in the first picture we have Tyrannosaurus Rex, T-Rex. Okay, it is commonly known as T-Rex. So it was very huge, or you can say colossal dinosaur. Okay, and as you must be knowing, dinosaurs are extinct and they are no more present on the earth. Then we have woolly mammoth, they are also extinct, and thirdly we have pterodactyl. Okay, so all these animals are extinct and they are not present on the earth anymore. So now imagine you are working for a film producer who's making a science fiction film. He wants you to come up with ideas for an enormous scary creature. Now combine several animals, reptiles and birds. Think of a name and describe this animal to your class. Now it's a very interesting thing to do. If, for example, if you are working under a film producer and he wants you to create you can say an imaginary creature. Okay, obviously it will be an imaginary creature. You cannot just make a live and kicking creature out of nowhere. So it is just your imagination, and if he says that come up with something very dangerous, and you can it has to be very scary and enormous and big and huge, and so what you can do is you can combine various features of all these animals. Okay, all these ancient extinct animals, say for example T-Rex and woolly mammoth and pterodactyl, and then you can come up with some strange creature, some scary kind of a monstrous creature. Okay, so this must be quite interesting to do. Now here the title says The Terrific Saurian Combat. What do you mean by terrific? Terrific means something extraordinarily good, or you can say intense. And saurian means any large reptile, especially a dinosaur or its other forms. Okay, so here we are talking about those huge dinosaurs or reptiles. Reptiles, you know, crocodiles and alligators, all those are reptiles. So they are talking about, the author is talking about all those creatures with reptiles and dinosaur like quality in it. Okay, and combat means battle. So this is a fictional story, and it's basically about the battle between the saurian, or the, say you can say the sea creatures or some imaginary creatures. We'll find out later on as we'll read the story. So let us begin. A German professor, Otto Lidenbrock, believes the Earth's core is not fiery liquid but solid and moderate in temperature. Now we all know that
at the earth's core. Earth's core means center or innermost part of the earth. Okay, जो अर्थ है बेटा, यू नो दैट इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, और इसके जो सेंटर में है it is supposed to be molten lava in there. Okay, but this German professor Otto Lidenbrock believes that it is not fiery liquid. Fiery means burning hot. Okay, so it is not molten lava, but it is solid and moderate in temperature. Okay, वो कह रहे हैं कि जो अर्थ के सेंटर में, जो कोर में है, वहाँ पे क्या है, it's not all liquid, but it is solid and moderate means it's not too hot, not too cold. So it is moderate in temperature. And he is convinced there are volcanic tubes going toward the center of the earth. And he believes that there are volcanic tubes. ठीक है, कि ऐसे volcanic tubes जो हैं वो center of the earth की तरफ जा रही हैं. He, his nephew Axel and their guide Hans descend into the chimney of an extinct volcano near Reykjavik, Iceland. Okay, अब ये जो है जो प्रोफेसर हैं ऑटो लिडनब्रॉक, उनका भतीजा, नेफ्यू, आप जानते हो नेफ्यू मीन्स भतीजा, तो उनका भतीजा जो है उसका नाम है एक्सेल, एंड देयर गाइड हैंस, उनका एक गाइड भी है, उसका नाम है हैंस. अब ये तीनों जने जो हैं they descend means to went down. Okay, so they went down into the chimney of an extinct, जो वहाँ एक opening है एक volcano की, वो volcano which is not active anymore and it has become extinct. Okay, so that means it has not erupted in say about 1000 years, and it is near Iceland. There's a place called Reykjavik and it is in Iceland. Now the three travelers set off into the bowels of the earth, means they go deep down into the innermost part of the earth, encountering many adventures and great dangers including prehistoric animals and natural hazards. अब वो जब जैसे वो एंटर करते हैं, वो जो चिमनी है वॉल्केनो की, उसमें जब वो एंटर करते हैं, so they engage in many adventures and they encounter great many dangers in there. Okay, और उनको वहाँ कौन कौन मिलता है, प्री हिस्टोरिक एनिमल्स जो बहुत ही एंशियंट हैं, दे आर एक्सटिंक्ट नाउ, सो दे मीट दोज एनिमल्स, एंड नेचुरल हजार्ड्स. ऑब्वियसली यू आर गोइंग डीप डाउन इन टू द अर्थ, सो देयर यू विल बी एनकाउंटरिंग न्यूमरस नेचुरल हजार्ड्स. बहुत तरीके के डेंजर्स से आपको आपका सामना होगा. Before eventually means finally, before coming to the surface again in southern Italy at the Stromboli volcano. और वो कहाँ से बाहर निकलते हैं, वो अर्थ के दूसरी साइड सदर्न इटली में वहाँ पर कोई वॉल्केनो है, तो वहाँ से वो दे कम आउट ऑफ द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम देयर. नाउ एक्सेल, हिज नेफ्यू, कीप्स अ डायरी. अब जो नेफ्यू है उनका, जो जर्मन प्रोफेसर हैं, उनका जो नेफ्यू है एक्सेल, उसकी आदत है, ही इज़ इन अ हैबिट ऑफ कीपिंग अ डायरी इन विच ही कीप्स ऑन मैंशनिंग डे टू डे एक्टिविटीज़, कि जो भी वो एडवेंचर्स या जो भी वो पूरे दिन में करते हैं, सो ही यूज़ टू नोट देम डाउन इन हिज डायरी विच ही यूज़ टू मेंटेन ऑल द टाइम विद हिम. नाउ इन दिस एक्सट्रैक्ट दे विटनेस अ कॉम्बैट बिटवीन मॉन्स्ट्रस सी क्रीचर्स. ओके, और ये जो स्टोरी है इसमें हम ये देखेंगे कि हाउ दे विटनेस मीन्स हाउ दे सॉ अ कॉम्बैट. उन्होंने कैसे एक कॉम्बैट को देखा अपनी आँखों से. ओके, दे विटनेस्ड दैट कॉम्बैट विद देयर ओन आइज बिटवीन मॉन्स्ट्रस सी क्रीचर्स, जिनको हम सोचते हैं कि ऐसे एनिमल्स नहीं होते, दे आर ओनली इन मूवीज़ एंड ओनली इन फिक्शन, दे आर नॉट इन रियल. सो उनको वो सी क्रीचर्स, ऐसे मॉन्स्ट्रस, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक टाइप के सी क्रीचर्स से उनका सामना होता है. ओके, सो ट्यूसडे August 18th,
So this is the date and day which has been mentioned in the diary of Alex. So evening came at last. Evening came at last means it was a long and tiring day for them. So that's why he has written like this. Evening came at last. कि आखिरकार शाम हो गई. The hour when the need for sleep caused our eyelids to be heavy. और नींद की वजह से उन्हें इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि उनकी जो पलकें हैं eyelids were becoming heavy and they wanted to sleep desperately. There is no night, not properly speaking, in this place any more than there is in summer in the Arctic regions. और वो जहाँ पर थे they were in the innermost part of the earth, so there was no night. और जैसे कि आर्कटिक रीजन में आपको पता होगा वहाँ पे समर्स नहीं होते, लाइकवाइज यहाँ पे भी कोई रात नहीं हो रही थी. सो they were quite confused when is the daytime and when is the night time out there, because it was completely blacked out there. Okay, so Hans however is steady at the rudder. Rudder means like you have steering wheels in cars to set the direction of the car. Likewise you have rudders at the back of the ships or boats. Okay, now when he rests I really cannot say. अब जो ये हैंस है वो कब रेस्ट करता था ये एलेक्स को नहीं पता चलता था. आई टेक एडवांटेज ऑफ हिज अलर्टनेस टू टेक अ लिटिल रेस्ट. और वो इतना ज़्यादा अलर्ट रहता था हैंस ऑल द टाइम दैट एलेक्स जो है ही यूज़ टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, कि उसका फ़ायदा उठाता था और थोड़ा सा रेस्ट कर लेता था, बिकॉज ही नो ही वॉज इन सेफ हैंड्स. But 2 hours later I was awakened from a heavy sleep by an awful shock. और 2 घंटे के बाद उसकी एकदम से आँख खुलती है अचानक से. उसकी जो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है एकदम से उसको बहुत तेज़ शॉक लगता है. The raft appeared to have struck upon a sunken rock. Okay, जो मे बी एक वो लॉग राफ्ट जैसे होती है, एक वुडन फ्लैटेंड पीस ऑफ लॉग पर दे मस्ट बी ट्रैवलिंग, सो दे मस्ट बी फ्लोटिंग ऑन द राफ्ट. सो एकदम से क्या होता है वो जो राफ्ट होती है वो कहाँ फंस जाती है जाके, वहाँ पर एक संकन रॉक होती है, मतलब एक सबमर्ज्ड जो थोड़ी फंसी हुई या दबी हुई एक रॉक, बड़ी सी रॉक होती है, तो वहाँ से टकरा के वो एकदम से झटका लगता है उसमें बहुत कस के. It was lifted right out of the water by some astonishing and mysterious power. और जो उनकी राफ्ट है उसको एकदम से ऐसा लगता है somebody has lifted it up and it has been lifted by some astonishing means surprising and mysterious unknown power, because they couldn't see anybody out there, so they were clueless, or they were quite shocked and surprised that who has just lifted the raft out of the water and then thrown off 20 fathoms distant. और उनको fathoms होता है a unit for measuring the depth of water. 1 fathom is equal to 1.8 meters or 6 feet. Okay, so 20 into 6 120 feet, so almost 120 feet दूर उनको उनकी राफ्ट को किसी ने उठा के फेंक दिया, ऐसा होने लगा. what is it? cried my uncle starting up. Are we shipwrecked or what? अब अंकल भी maybe he was also sleeping, so he just woke and he just cried means एकदम वो चिल्लाए बहुत ज़ोर से. Okay, he shouted. Cried means weeping नहीं, cried means he shouted. And he said, are we shipwrecked? Shipwrecked means when a ship sinks or runs aground. Okay, so Hans raised his hand and pointed to where about 200 yards off a large black mass was moving up and down. I looked with awe. My worst fears were confirmed. और हैंस जो है अपना हाथ उठा के वहाँ दूसरी तरफ पॉइंट आउट करता है अबाउट 200 yards away where there was a large black mass. वहाँ पे एक काले रंग का कुछ मास टाइप का था वहाँ पे. Okay, there was a figure, a black figure out there, and
I looked with awe. Awe means surprise. Axel was totally surprised and he was taken aback, and his worst fears were confirmed. Now he was quite sure and convinced that whatever he was fearing, that he'll encounter some kind of monsters and some scary creatures. So all these fears were now coming true. It is a colossal monster, I cried, clasping my hands. मैंने अपने हाथ ऐसे डर के मारे एक दूसरे से ऐसे जकड़ लिए, एंड आई सेड इट वॉज अ कोलोसल मॉन्स्टर. कोलोसल मीन्स वेरी ह्यूज, ओके, मैग्नानिमस, वेरी ह्यूज. Yes, cried the agitated professor. Agitated means worrisome or fearful. Now, the professor was also quite scared, so he said yes. It's a huge sea lizard of terrible size and shape. और उन्होंने कहा कि ये ज़रूर कोई बड़ी सी सी लिजर्ड है. लिजर्ड आपको पता है ना, जिसको हिंदी में छिपकली कहते हैं. सो उनको लग रहा था कि कोई बड़ी सी लिजर्ड है जो कि बहुत बड़ी है. इट्स ऑफ टेरेबल साइज एंड शेप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम वेरी ह्यूज. एंड फादर ऑन लुक एन एनॉर्मस क्रोकोडाइल. और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रोकोडाइल भी था. एनॉर्मस मीन्स ह्यूज. लुक एट हिज हीडियस जॉज. हीडियस मीन्स वेरी अगली. उसके जो जॉज थे, दे वर क्वाइट हीडियस एंड स्कैरी. एंड दैट रो ऑफ मॉन्स्ट्रस टीथ. और उसके जो बड़े बड़े दांत थे वो भी बड़े खतरनाक लग रहे थे. हाँ, ही हैज़ गॉन, आई सेड, कि मुझे लगा कि वो चला गया. अ वेल शाउटेड द प्रोफेसर. आई कैन सी हर एनॉर्मस फिन्स. सी हाउ शी ब्लोज एयर एंड वाटर. ना आपको पता है कि वेल जो है वो अपने जो उसका ब्लो होल होता है एट द सेंटर ऑफ इट्स हेड, वो वहाँ से एकदम इट ब्लोज ऑफ वाटर फ्रॉम इट. ओके, सो प्रोफेसर ने वो चीज़ देखी और उन्होंने कहा कि वो श्योरली एक वेल है. 2 liquid columns rose to a vast height above the level of the sea. और एकदम जैसे फाउंटेन की तरह एकदम बहुत ऊंची हाइट तक वो ब्लो होल से उसके पानी वेल के वो सी लेवल से भी ऊपर तक जा रहा था. एंड देन फेल विद अ टेरिफिक क्रैश. और जब वो इतनी ऊपर से पानी गिरता है तो कैसे क्रैश होता है, एकदम आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, क्रिएटिंग ऑफुल इकोज. और बहुत तेज़ एको हो रही थी उसकी जो पानी की आवाज़ जब वो क्रैश कर रहा था. तो वी स्टूड स्टिल सरप्राइज्ड, टेरर स्ट्रिकन एट द साइट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ फियरफुल मरीन मॉन्स्टर्स. और अब ये सब तीनों जो थे, प्रोफेसर, his nephew Axel and Hans the guide, so all three of them were quite surprised and terror stricken. Terror stricken means एकदम डरे हुए थे बहुत बुरी तरीके से. they were quite scared at the sight of this group of fearful marine monsters. और उनके marine means sea, जो ये sea creatures थे, sea monsters थे, इनसे इनको बहुत डर लग रहा था. They were more dreadful in reality than in my dreams. Okay, maybe in his imagination he must have pictured them कि कैसे दिखते होंगे, बट जब रियलिटी में वो देख रहा था एलेक्स, तो he believed that they are more dreadful. वो बहुत ज़्यादा scary लग रहे हैं in reality. They were enormous. Enormous means they were huge, massive. Okay, they were quite magnanimous in size, and they were quite scary too. So just read this chapter once or twice, and we'll continue reading it in the next video. Okay, and thank you for watching this video.